Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your computer class. So students, as you know that in our previous class, we have started with a new topic, that is classification of computers. Okay, so this was the topic that we have started in our previous session. So today I'm going to continue with the same topic. Okay, so first of all, let's recall all the topics that we have done yesterday. Okay, so in the yesterday session, I told you about the meaning of the classification of computers. Okay, so the meaning of classification of computers is that classifying or the categorizing the computers. Categorizing means grouping the computers. Computers को उनकी basic functions के according उनको group में बांटना, categorize करना. Okay, according to the shapes, sizes and the weights. Okay, सो उनको एक ऐसे एज वी कैटेगराइज द स्टूडेंट्स क्लास वाइज, जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को क्लास वाइज कैटेगराइज करते हैं दैट दीज स्टूडेंट्स आर इन क्लास 1 एंड दीज आर इन क्लास 2 एंड दीज आर इन क्लास 3. So just like that, there is also classification of computers is there, in which we classify or categorize the computers according to their different shapes, sizes, weights, and the type of jobs or the sort of work they perform. किस तरह का वो काम करते हैं, क्या उनका शेप है, क्या साइज है, कि जो काम वो करते हैं, द फंक्शंस जो उसके ऊपर किए जाते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो द कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड. उसी के बेसिस पे कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है. Okay, so here they have given the computer can be classified in the different ways according to its different shapes, sizes and the working. कहते हैं कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट वेज में, उनकी शेप, साइज और वर्किंग के अकॉर्डिंग. Okay, so computers can be classified in different ways according to its different shapes, sizes and working. Computer has its, okay, कि उनको, okay, so here, okay, basically they have taken the two bases on the which, or they have classified the computers on the basis of two things, that is according to the purpose and according to the size. So they have taken these two basics for classifying the computer. Okay, so here they have given a chart as well, so that you can understand it very easily, that how they have classified the computer. So on the basis, as you can see my cursor, according to purpose, the computers are classified analog type, digital type and hybrid. Whereas according to size, the computer are classified such as supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer and the mobile devices. So we have already in the previous class, we have already started with according to the purpose. Classification of computers according to purpose. So on the purpose basis, they have classified the computer. Purpose में उन्होंने computers को three places पे classify किया है, that is analog, digital and hybrid. Analog and digital we have already done in the yesterday's session. Hybrid is left, so we will start with the hybrid. Okay, but before that I will just give you a small explanation about the analog computer and the digital computer as well. So analog computers kya beta, the analog computers they just give you the approximate result. Okay, so the important point or the important thing about this analog computer is that they give you approximate result. वो आपको approximate result देते हैं. They will just give you a data about the लगभग, not accurate, they just give you a लगभग या approximate देते हैं result. Okay, that is not the accurate. Okay, so जैसे suppose you are driving, तो आपसे कोई पूछता है that what is the speed of the car, so you become the car is on 50, the car is the running at the 50 kilometers per hour. Okay, that it is not the exact 50, तो 50 के लगभग होती है. Okay, so these are the various devices, the pictures that is given here. On the basis of with these pictures you can classify the computers, analog computers. The first is the thermometer, second is the voltmeter. Thermometer is used for checking the temperature of the human body. Voltmeter is used for checking the
volt, or you can say the the um, volt of the electricity. Third is the speedometer. It is used for checking the speed of the car or any other vehicle. Next is the fuel gauge, that is used to check the fuel of and that is available in the vehicle कि इस vehicle में कितना fuel है या कितना रहता है. Next is the scale machine. This is used for measuring anything. Especially I have seen these scaling machine for measuring the weight of the newborns. Second computer that we have done was the digital computer. ये कल हमने दूसरा किया था, that is digital computer. Now what is digital computer? A digital computer works on the principles of binary mathematics. In binary, all calculations are represented through 0 and 1. ओके सो जो डिजिटल कंप्यूटर बेटा ये बाइनरी मैथमेटिक्स के बेसिस पे वर्क करता है एंड इन बाइनरी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं दे आर डन ऑन द बेसिस ऑन दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू 0 एंड 1. ओके तो 0 और 1 के बेसिस पे दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी मैथमेटिक्स. ओके so digital computers, they give you the result or you can say the output in a digital format. तो जो digital computers होते हैं बेटा ये they just give you the output digital format. That means they give you the output in numbers, zeros to one. ठीक है तो 0 1 में ओके आपको दे जस्ट गिव यू द रिजल्ट. ओके सो दिस इज these are the digital computers. So as I have given you the example of the digital wristwatch, this is the best example. तो देखिए suppose you want to see the time in the analog clock. अगर आप एक एनालॉग क्लॉक में या वॉल क्लॉक में टाइम देखते हो तो अगर अगर ऐसे 10:58 is there and when you look at the clock you will say that it is 11, but actually the time is 10:58 minutes and 50 seconds. Okay, and that exactly minutes and seconds that you can learn only through the digital watch. So digital watch can tell you the exact time and that minutes and the seconds, whereas the analog clock gives you the approximate time. Okay, chaliye. So these things that we have already done in the previous session, that is on the basis of purpose, the computers हम already दो कर चुके हैं, that is analog computer and the digital computer. Now we will start with the third form of the computer that is categorized according to the purpose, that is hybrid computer. Okay, now hybrid modes, it the आपने सुना होगा. So have you ever heard the word hybrid? What it means? Hybrid होता है to make a combination of two different things. Hybrid is a combination of two different things. Okay, so if you are doing something like if you are adding two different things together, okay, that is you are hybriding that. Okay, so you are just getting the hybrid form of that. So hybrid computers are the combination of both analog and the digital computers. A hybrid computer system offers a cost-effective method that is used to perform the complex simulations. An example of the hybrid computer is the ECG machine used in hospitals to measure the heartbeat of the patients. We use hybrid computers in the weather forecasting too. Okay, so hybrid computers. Okay, so the name hybrid, so first of all you need to understand this term. This is a very important term that you need to understand, that is hybrid. Hybrid is combination of the two different thing. अभी यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, but hybrid makes the combination. A hybrid word we use when we make a combination, जब हम दो अलग अलग चीजों को मिला के एक अलग चीज बनाते हैं, that is known as the hybrid. Okay, कई बार आपने देखा होगा हाइब्रिड प्लांट्स आर देयर. ओके तो वो अलग अलग दो प्लांट्स को इकट्ठे जोड़ के वो उसमें से एक नया प्लांट बनाते हैं. ओके दैट इज नोन एज द हाइब्रिड. सो जस्ट लाइक इन द एनिमल्स. ओके सो हाइब्रिड एनिमल्स आर आल्सो देयर, प्लांट्स आर आल्सो देयर. सो देख अलग चीजों को मिला के जब एक चीज बनती है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड. So here we are talking about the computers. So here they are making the combination of analog and the digital computer. For making the hybrid computers, they are making the combination of the analog and the digital computer. अब वो analog और digital computer को combine करके they just make the another form of the computer that is known as
hybrid computer. Okay. Next, okay, so the hybrid computers are the combination of both analog and the digital computers. A hybrid computer system offers a cost-effective method that is used to perform the complex simulations. Okay, so these hybrid computers, they are quite very cost-effective. These are quite cost-effective computers. Okay, so these hybrid computers, they are the combinations, okay, and they are very cost effective. Okay, so this making a hybrid computer, using a hybrid computer is quite very cost effective methods, that is quite cheap for them. Quite cheap means मतलब उनके लिए that will be little bit not costly, वो इतना costly नहीं पड़ेगा for working on these hybrid computers. Okay, that is used to perform the complex simulations. Complex simulations means difficult one, so they can perform the difficult calculations and the difficult work with the help of these hybrid computers. Okay, an example of the hybrid computer is the ECG machines used in the hospitals to measure the heartbeat of the patients. So here they have given an example of the ECG machine. ECG मशीन आपने देखा होगा, इफ यू हैव अ सीन, अगर आपने देखा होगा बेटा, जो ECG machines होती हैं, these are being used in the hospitals for measuring the heartbeat of the patient. So the patients की heartbeat को measure करने के लिए, see, these ECG machines are being used. Okay, so patients की heartbeat को measure करने के लिए कि that how it's going on, whether it's up or down. If someone is facing some problem related to the heart or the chest, okay, so the doctors, they mostly they recommend for this ECG check, okay, under which they observe the heartbeats of the patients. Okay, और जो heartbeat जो आती है ना patients की आती है, that comes on a very long, एक वो लंबे से पेपर के ऊपर आती है, so that shows, so only doctors will be able to understand that what is it showing or whatever it is. Okay, other than that, this hybrid computers is we use hybrid computers in weather forecasting. So the weather forecasting of the world, okay, weather forecasting क्या होता है, जो मौसम का अनुमान लगाते हैं. Okay, so you ever heard about the मौसम विभाग, okay, weather forecasting department, जिसको कि हम मौसम विभाग बोलते हैं. ओके, आपने सुना होगा एट द एंड ऑफ द न्यूज स्पेशली. सो यू हैव सीन दैट लेट्स, मतलब बोलते हैं कि आज मौसम की जानकारी की, दैट हाउ विल बी द वेदर, इट विल बी सनी और इट विल बी रेनी और इट विल बी कोल्ड और whatever will be the weather. So that is measured by the weather forecasting department. So they also use the hybrid computers. So they जो weather forecasting department है बेटा, they also use the hybrid computers for weather forecasting purpose. Okay, so here the examples of the hybrid computer is ECG machines that is used in the hospitals, and the second is the hybrid computers is used in the weather forecasting as well. Okay, so this is the third classification, sub classification, not classification. This is the third sub classification of the computers on the basis of their purpose. So here it is. So on the basis of the purpose, the computers are classified into three parts. Okay, so on the basis of the purpose, or the purpose means उनके काम के हिसाब से, the computers are classified into three different parts. That is the analog computer, second was digital computer, and the third is hybrid computer. Now we will move to the next classification, that is according to the size. According to size, the computers are classified in five groups. Okay, so according to the size, earlier according to the purpose, the computers are classified in three parts. So according to purpose, computers को three parts में divide किया गया था. That was analog, digital and the hybrid. But according to the size, देखिए, this line is quite very important and you need to underline it on your notebooks. Okay, इस line को on your books, you need to underline this line. According to the size, the computers are classified into five groups. तो size के according computers को five groups में divide किया गया है. So the first is the supercomputer. So the first according to the size, so we'll classify the computer that is supercomputer. Okay, now what is a supercomputer? What is their size? How it looks? What is their work and how it works? Okay,
अभी देखिए उनके साइज के हिसाब से, बड़े छोटे के साइज के हैं, उस हिसाब से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है। उसमें सबसे पहले कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सुपर कंप्यूटर। Okay, so have they have given the description कि सब सुपर कंप्यूटर है क्या चीज, they have just given a description of that. Super computer is the biggest and the most powerful computer. It is a very expensive computer. It can perform large and the complex calculative task at a very high speed. Okay, so did you understood that? देखिए इसके सुपर कंप्यूटर, देखिए उसका नाम सुपर क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन, दैट हाउ इट वर्क्स, हाउ इट लुक्स। ओके, इसलिए को सुपर क्या होता है, सुपर मीन्स हम सुपर वर्ड यूज करते हैं बेसिकली फॉर एनीथिंग दैट इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ओके, फॉर दैट वी यूज द टर्म सुपर। हम टर्म जो सुपर यूज करते हैं बहुत ही अलग सी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए यूज करते हैं ना, वेरी दिस इज वेरी सुपर। कोई भी चीज जो बहुत अच्छी होती है उसके लिए वी यूज द वर्ड सुपर। So in this as well, we use the term super because the function of this computer is also super, is also different than the others. So, supercomputer is the biggest and the most powerful computer. ये सुपर कंप्यूटर जो है बेटा वो सबसे बड़ा कंप्यूटर है और सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी है। No, you will not pronunciate it as powerful. It is not powerful. It is powerful. Okay, supercomputer is the biggest and the most powerful computer. तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटर और मोस्ट पावरफुल भी है। Why? इट इज वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर एंड जो कि ये बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। ओके, now it can perform large and the complex calculative task at a very high speed. So it is so good, or it is so मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस है दैट इज सो यूनिक कि ये बड़े से बड़ा और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट, complex means difficult. So difficult से difficult calculation it can perform at a very high speed. Okay, so that's why for its this function like this, because it functions like this, that's why it is termed as a supercomputer. देखिए, so इसको supercomputer क्यों कहा जाता है, because it is the most biggest and the most powerful computer. Okay, you need to underline all these lines that is given here. The description about the supercomputer is given here, so you need to underline it. Okay, so जो कि मैंने अभी highlight किया है बेटा cursor से, just underline it in your books. So why सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है और मोस्ट पावरफुल है, दैट इट कैन परफॉर्म वेल एंड इट कैन परफॉर्म बिलियंस एंड द ट्रिलियंस ऑफ टास्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड इन जस्ट मिनी सेकेंड्स। ओके, एंड दो इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव एज वेल, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। इट कैन परफॉर्म लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिव टास्क एट अ वेरी हाई स्पीड। Okay, so though it is very costly and though it is very big, so this is the reason that it can perform the large, वो बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल calculations भी it can perform at a very high speed, वो बहुत ही जबरदस्त speed पे it can complete it. So this is the reason, that's why it is known as the super computer. Next they have here it is the size. The second thing is the size. So let's talk about the size of the supercomputer. The size is, it is the biggest computer. It is as big as the size of a room. Okay, तो देखिए हम यहाँ पे अब साइज की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है, सो इसलिए इसको सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है इन द टर्म्स ऑफ साइज लेवल। तो साइज के टर्म्स पे दिस इज द बिगेस्ट कंप्यूटर। ओके, एंड इसका साइज इतना बड़ा है जस्ट लाइक अ रूम, एक कमरे के जैसा। Okay, so it is quite very big in size and its size is like a big room. कि कई जो कंपनीज होते हैं, जो कई जो मोस्टली जो हैकर्स होते हैं, दे हैव सुपर कंप्यूटर, उनके पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो अपने कंप्यूटर्स में इतनी वो इंस्टॉल करके रखते हैं कि मतलब दे जस्ट फंक्शन ऑन देयर, वो उनकी अगर वो कहीं दूर भी होंगे तो दे दीज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल, दे कैन परफॉर्म द टास्क व्हाट देयर मास्टर वांटेड टू डू। Okay, so they had quite very unique features. Okay, जो normal computers हम बेटा घर में use करते हैं, they are not like that. They have such different features than those.
उससे ये बहुत ही अलग होते हैं. So that's why they are known as the okay. So computers. So the third is the location. So let's talk about the location of the supercomputer. They are found in big organizations. So where these supercomputers are found, these are basically found in the big organizations. सो ज़्यादातर यू का मतलब जो होम यूजर्स हैं, जैसे कि हम अपने घर में कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स यूज करते हैं, यू कैन रियली फाइंड इट देयर. वहां पे आपको नहीं मिलेंगे. ये आपको बड़ी बड़ी आईटी फील्ड्स या आईटी कंपनीज में मिलेंगे. तो यू कैन फाइंड देम इन योर होम्स. ओके, तो दे आर फाउंड इन द वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, या रोबोटिक्स कंपनी होती है. सो देयर यू कैन फाइंड दीज सुपर कंप्यूटर. Next is, let's talk about its speed. The speed. They can process 1 trillion instructions per second. So this is the speed of the computer. These are supercomputers. Okay, so इनकी speeds क्या है? What is the speed? It can process 1 trillion instructions per second. ये एक seconds में near about 1 trillion, more than billion, करोड़ से भी ऊपर. ओके, तो एक सेकेंड्स में ये इट कैन परफॉर्म 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. सो एक सेकेंड में ये 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं. सो यू कैन यू इमेजिन दैट हाउ मल्टी फंक्शनिंग दीज सुपर कंप्यूटर्स आर. सो वी कांट इवन इमेजिन दैट हाउ दीज सुपर कंप्यूटर वर्क्स. Okay, so this is quite very important. That is, they can process 1 trillion instructions per second. Next is uses. So now we'll come to the uses of the supercomputer, that why it is being used. इनको use किया क्यों किया जाता है. Okay, so let's talk about the uses of the supercomputer. Supercomputer is used in the weather forecasting, nuclear power stations, military simulations, research laboratories, and the animation movies. ओके, तो देखिए इनका यूज कहाँ होता है. सो दे आर यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग. मौसम की जानकारी के वक्त जो दी वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट्स, दे यूज दी सुपर कंप्यूटर्स. अदर देन दैट, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, जो न्यूक्लियर स्टेशन होते हैं, एंड दे आर क्वाइट वेरी हाईटेक स्टेशंस, जो कि किसी भी कंट्री का एक आप कह लीजिए कि पावर को हम डिफाइन करते हैं विद द न्यूक्लियर पावर ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री की जो पावर है वो उसकी न्यूक्लियर पावर से ही nuclear power is also one of the factor on the basis of which the power of the power, not the power, the power of the country is calculated. Okay, so इसके अलावा ये कंप्यूटर, these computers are used in the weather forecasting में यूज होते हैं. they are also used in the nuclear power stations, military simulations. जो military है हमारी, ओके देखिए हमारी जो मिलिट्री है वो कैसे दूसरे देशों पे नजर रखती है कि कौन सा देश कहाँ से क्या कर रहा है, कि कौन हमारे इंडिया की बाउंड्री में घुसने की कोशिश कर रहा है, या हाउ दी अटैकर्स और द इन्वेडर्स और दी अदर कंट्रीज, द मिलिट्रीज ऑफ अदर कंट्रीज, दे आर प्लानिंग टू come in the country. So these for this, so they all use these supercomputers to store the data, and to for so that मतलब सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी पर्पस के लिए these military simulations, they also use the super computers. Next is the research laboratories. The next is the research laboratories. So research laboratories includes the laboratories of the scientists. Okay, सो साइंटिस्ट वगैरह जो बेटा होते हैं, दे ऑल्सो यूज दीज सुपर कंप्यूटर्स फॉर देयर रिसर्च वर्क. जो रिसर्चेस करते जाते हैं वो उसको दे जस्ट कीप द डेटा इन दीज सुपर कंप्यूटर्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस. ओके, द लास्ट इज द एनिमेशन मूवीज. एनिमेशन मूवीज जो आप देखते हो, जो कार्टून मूवीज आप देखते हो, फॉर दैट ऑल्सो this supercomputer is being used. So supercomputers are also used for in the animation movies. जो animated movies आप देखते हो बेटा, okay, all the dubbing and all the actings of the animated characters, that are done with the help of the supercomputers only.
Okay, so this is the uses of supercomputer. So देखिए क्या क्या use है. The first is the weather forecasting, nuclear power stations, military simulations, research laboratories, and the animation movies. So these are the fields where these supercomputers are being used. Okay, so this is the most important one, that is supercomputer. Okay, so next is okay. So here you can see, as I will kindly focus on my cursor, update your knowledge. Okay, so now I'm talking about these points. So, okay, so the cursor जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, we will talk about all these points. Update your knowledge. So this knowledge we are going to update about the supercomputers. हम supercomputers के बारे में कुछ knowledge update करेंगे अपनी. The first is, the first supercomputer was Cray 1, developed by Cray Research Incorporation USA. So सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था Cray 1, CRAY, Cray first, and it was developed by the Cray Research Incorporation of the USA. So this is the name of the company that is located in the USA, जो कि United States of America में है. So they have invented the first supercomputer, and the name of the computer was named after the name of the company, that is the Cray first. Second is Param 10,000 and the Anurag are the first Indian supercomputers. So देखिए सुनने में लगेगा कि नाम है किसी का, Param 10,000 and Anurag are the first Indian supercomputers. तो ये पहले दो सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के. ओके, दीज आर द, आपको सुनने में लगेगा किसी इंसान का नाम है, बट इट इज द नेम ऑफ द two supercomputers of India. The first is the Param 10,000 and the second is the Anurag. Next, the world's fastest supercomputer, according to the top 500 supercomputers in the list of 2009, is the Cray XT5 and also known as Jaguar. Okay, so the world's fastest supercomputer, दुनिया का सबसे fastest supercomputers में, according to the 500 supercomputer, okay, तो आज तक जो कि 500 supercomputers हैं उसमें से सबसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है, एक लिस्ट आई थी 2009 में, तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज, दिस इज क्रे XT5. दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर. ओके, एंड द अदर नेम फॉर दिस क्रे XT5 is Jaguar. So that Cray XT5. Okay, this is the world's fastest supercomputer that was invented by the Cray Research Incorporation in the year of USA. And there's a list came, एक 2009 में एक लिस्ट आई थी जिसमें कि Cray XT5 को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरकम्प्यूटर माना गया था. एंड द अदर नेम ऑफ दिस Cray XT5 सुपरकम्प्यूटर इज Jaguar, क्योंकि Jaguar इज द फास्टेस्ट एनिमल, वो बहुत फास्ट रन करता है. सो इसी नाम पे ही इसका नाम भी रखा गया था. Next is the last, the IBM Roadrunner was crowned number one in the June 2009 after becoming the world's fastest supercomputer. Okay, तो जून में IBM कंपनी का IBM Roadrunner इसको नंबर वन कंप्यूटर, नंबर वन फास्टेस्ट कंप्यूटर में का क्राउन में तब से नवाजा गया था कि IBM रोड रनर को दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नवाजा गया था इन द जून 2009. Okay, so these are the some information about the world's for the दुनिया के सब जो सबसे सुपर कंप्यूटर्स जितने भी बने हैं उसमें से IBM. ओके, सो 2000 इन द जून 2009 द IBM रोड रनर वाज क्राउंड मींस कि हम कहते हैं ताज पहनाया ना, कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि क्राउंड एज मिस इंडिया, तो उसको मिस इंडिया बनाया गया, तो वैसे ही IBM रोड रनर. ओके, द IBM इज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. दिस इज वन ऑफ द लीडिंग इंफोटेक IT कंपनी इन द वर्ल्ड. Okay, and Hanmal Haltreth has started this company. Okay, तो जून 2009 में IBM Roadrunner को दुनिया का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना. Okay, so these are the super computers. So okay, so you can see this is the picture of super computer. Okay, so with this I'm just ending the today's session here, class. Okay, so I'll see you again in the next session. Until then, everybody,
kindly revise all the topics that we have discussed in the today's session or the earlier session. Okay, class? So, good day, children.